Yes, everyone. A very good afternoon to all of you. Very good afternoon. बड़ी अपडेट आ रही है जो एक डिसीजन था पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का, सिंगल जज बेंच का, उस डिसीजन को अपहेल्ड किया गया है और एचपीएससी ने जो एलपीए फाइल की थी उसको डिसमिस किया गया है। अब हरियाणा एडीए के अंदर मैं आपको वो दिखाऊंगा कि आज जो है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस ने क्या प्रोनाउंस किया है वो भी हम समझेंगे। अब हरियाणा एडीए के अंदर जो सिलेबस को लेके एक लड़ाई लड़ी गई थी लखन सिंह के द्वारा, वो फाइनली जो है कंक्लूड हो गई है और हरियाणा एडी की वैकेंसीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेंगी। मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि डिसीजन क्या आया है। डिसीजन सुन लीजिए। जो हमारा 3 स्टेजेस पे एग्जाम होता है हरियाणा एडीए का, राइट। हरियाणा एडीए जो है 3 चरणों में ये एग्जाम होता है। इसमें प्रीलिम्स होता है, राइट। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, तीनों चीज़ों की रिगार्डिंग जो है फाइनल डिसीजन आ गया है और यहां तक ये भी कह दिया गया है कि फटाक से जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया जाए। तो अगर हम बात करें प्रीलिम्स में, मिनिमम, जी हाँ, मिनिमम 50% तो लॉ के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये 50% से 60%, 70% भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 50% क्वेश्चंस लॉ के होंगे। प्लस जो बाकी पोर्शन रह जाएगा वो अदर सब्जेक्ट्स रहेंगे। अदर सब्जेक्ट्स कौन से रह सकते हैं बेटा? अदर सब्जेक्ट्स में जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, कुछ भी हो सकता है। वो एचपीएससी डिसाइड करेगा, सिमिलर ही रखेगा। और प्रीलिम्स में जो कट ऑफ को क्लियर करेगा उसके 10 टाइम स्टूडेंट्स जो हैं, 10 टाइम स्टूडेंट्स मेंस में अपीयर करेंगे और मेंस से 2 टाइम स्टूडेंट्स जो हैं आपके इंटरव्यू में अपीयर करेंगे। अब मैं आपको जो है वो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो किसी बच्चे ने मेरे साथ शेयर की है, जो आज वहां पे हुआ है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में। उसकी जो है मैं क्लिप आपको दिखाना चाहता हूं। तो आप लोग खुद लोग ध्यान से सुनिएगा कि ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। बहुत जल्दी जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी इनिशिएट किया जाएगा। तो ये है। और अगर आप लोग हरियाणा के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ रहा होगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। सारी चीजें वहां पे हम आपको सर्कुलेट करते रहेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा। जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मैंने कल भी बच्चों को बताया था ये जो है ये जो वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप देखने को मिलेगा, राइट। इसके डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये लिखा हुआ है क्लिक है टू ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप। इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, गूगल फॉर्म को भी फिल कर सकते हो, राइट। और आप में से कोई बच्चा हरियाणा की प्रिपरेशन करना चाहता है तो प्लान पहले ही कर लिया, ठीक है। तो 15 मई से जो है हरियाणा एडीए का एक प्रीलिम्स बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक बार आप डायरेक्टली जो है वो सुन लीजिए जो आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हुआ है। प्लीज लिसन इट केयरफुली, लिसन इट केयरफुली एवरीवन। आराम से सुनिए, ध्यान से सुनिए। Whereafter they would be subjected to a screening test. The screening test, the syllabus stroke topic for screening test has been specified, which consists of general science, semicolon, current events of national and international importance, semicolon, history of India. ये page 129 पे you can reproduce it from this. Every candidate, in order to compete at the second level of recruitment, that is subject knowledge test, must pass 25%, must obtain 25% marks in the screening test. The total number of posts advertised are 255. As per the scheme, 4 times the number of posts per candidates equal to 4 times the number of posts are to be called for the subject knowledge test. In such circumstances, though the screening test, though the marks in screening tests are not to be counted for considering the merit of a candidate, yet the marks attain importance in as much as the candidate scoring higher marks in the screening test alone would be allowed to participate in the subject knowledge test insofar as they are included in 4 times the number of posts. Yes, sir.
The petitioners before the learned single judge contended that in the screening test, the syllabus stroke topic have nothing to do with the field of law, in as much as none of the subjects of law have been included, and therefore the screening out of candidates is on a criteria which is wholly irrational, in as much as the merit of a candidate for appointment to the post of district assistant attorney will have to be determined with reference to his proficiency in the field of law and not on other subjects, alone. It was also contended that once screening test is qualifying in nature and its merit is not to be counted, then all those who qualify the test ought to be allowed to participate in the subject knowledge test, and the contrary view taken by the commission is arbitrary. Learned single judge has found substance in both the contentions and therefore has interfered with the process of recruitment by observing as under. Please reproduce from paragraph 74 to 81. But Learned Advocate General assisted by Shri 𝐂𝐈𝐀𝐿 and both of you are Mr. Sanjeev Kaushik first note, then Mr. Kaushik, and you are also there. And Mr. 𝐂𝐈𝐀𝐿 argues that the anxiety on part of the state is to select the best candidates for appointment to the post of district assistant attorney, and for such purposes holding of screening test becomes inevitable when around 27,000, when more than Mr. Kaushik, what is the number? 27,500. When 27,500 candidates have applied for the post, and it would not be possible to hold subject knowledge test for all of them at the first instance. It is further submitted that the screening test requires scoring of 25% marks only, and therefore no exception can be taken to the policy formulated for recruitment by the state of Haryana. But the submission advanced on behalf of the appellants is by the counsels appearing for the respondent petitioners. But having considered the submissions, we were not persuaded to accept the arguments of the Learned Advocate General, inasmuch as we find substance in the view taken by the learned single judge that for selection to the post of district assistant attorney, the paramount consideration would be the efficiency, would be the ability of the candidate to would be the knowledge stroke ability of the candidate in the field of law, which is not figuring anywhere in the screening test, which does not form part of the screening test. Though screening test is said to be only test is said to be qualifying in nature, but its merit will become relevant once it is found that only 4 times the number of candidates are to be called, whereas the total number of candidates is far more. But faced with the observations made by the court, Learned Advocate General, on the basis of instructions obtained, makes a statement that the state
would be prepared to conduct the screening test by wherein 50% questions would be from the field of law, while remaining 50% would be from the other topics which are quoted above. The Learned Advocate General also states that the screening test being qualifying in nature, the state would call, the commission would call 10 times the number of posts, would call candidates to the extent of 10 times the number of posts to take part in the subject knowledge test. The submission advanced by the Learned Advocate General has been accepted. The fair suggestion given by the Learned Advocate General is accepted by all the respondent petitioners. It is stated on behalf of the respondent petitioners that if the state proposes to proceed with the recruitment in the manner indicated by the Advocate General, they have no objection. But on account of the consent, on account of the respective stand taken by the parties, we dispose of this appeal by modifying the judgment of the learned single judge, permitting the commission to proceed with the recruitment by holding by conducting recruitment by conducting three-tier recruitment process. The second and third tier of recruitment, as per the advertisement, as per the pattern of examination, will remain unaltered. There may be a little difficulty because now out of 4 times they were to call 2 times for interview. So normally it is no. As my lord think it proper, we are just pointing out one thing. Nothing. Out of 10, my lord, always 3 times persons are called for interview. We are not talking about our clients only. We are just talking about the overall selection criteria. Normally, when 10 times persons are called, the interview persons would be 3 times. Otherwise, it was 4 and that only 2 times will be. Yes, that was part of the. Where is that? My lord. But that was the same. Whatever is the consistent practice, let it remain. But only one thing. So far as the screening test is concerned, the test would consist of objective type exam, objective type multiple MCQ, multiple choice questions. multiple choice questions with 50 questions attributed My to lord, the field of law. here only While thing is remaining minimum, 50. so that my lord, they may decide even to give extra weightage to the law. All right. Minimum. Minimum 50% questions would be from the field of law, while remaining 50 as referred to above. There are various advertisements. Either they have been finalized or they are in process. Yes, There is similar criteria was followed. Stop. This Yes, may not be treated as precedent. Advocate General also states that Yes. appointment for the post of that the suggestion made by him is restricted only to recruitment for the post of district assistant attorney, as lawyers are, as such attorneys are urgently required in different districts, and his statement will not be cited as a precedent in other cases. Grateful. We are really grateful. Whereafter they would be subjected to a screening test.
यस, सो फाइनली जो है आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा कि आज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने जो एलपीए थी एचपीएससी वर्सेस लखन सिंह की, उसमें क्या हेल्ड किया है। अब बात कर लेते हैं क्या फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे। जी हाँ, पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है दोबारा से आएगा, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस दोबारा से इनिशिएट किया जाएगा। यहाँ पे जिन बच्चों ने हरियाणा एडीए के तब फॉर्म फिल नहीं किए थे वो अब दोबारा से फॉर्म फिल कर पाएंगे, और जिन्होंने जो पुराने 27,500 बच्चों ने हरियाणा एडीए के फॉर्म फिल कर दिए थे उनको दोबारा से फॉर्म फिल करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आपको वो अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो संभाल के रखना होगा। अब बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट, क्योंकि हरियाणा एडीए की वैकेंसीज जो है बहुत जल्दी नोटिफाई होने वाली हैं। जब पहले हरियाणा एडीए की वैकेंसीज आई थी, सिलेबस करके हम लोग हाई कोर्ट तक पहुंचे थे, वहां पे अब जो है फाइनली रिलीफ हमें मिला है। तब हमने एक बैच लॉन्च किया था प्रोसिक्यूटर हरियाणा एडीए, और इस बैच में काफी सारे बच्चों ने जो एनरोलमेंट करवाया था। ये प्री मेंस इंटरव्यू का बैच था। एक आप सबके लिए गुड न्यूज है, जिन स्टूडेंट्स ने इस हरियाणा एडीए प्रोसिक्यूटर बैच में उस टाइम पे एनरोलमेंट करवाया था, जो अब हमारा हरियाणा एडीए प्रीलिम्स बैच 15 मई से स्टार्ट हो रहा है, इस बैच का एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। जी हां, आपको इस बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आपने हमारा पुराने वाला हरियाणा एडीए बैच एनरोल किया था तो इस बैच में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एक्सेस मिलेगा। प्रीलिम्स का ये बैच रहेगा प्रोसिक्यूटर हरियाणा एडीए 2026 प्रीलिम्स बैच, क्योंकि 50% लो है, 50% अदर सब्जेक्ट्स हैं। 15 मई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज भी इसी में रहेगी, डाउट सेशन, लेक्चर नोट्स, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ इसी बैच में रहेगा। और जो पुराने हमारे स्टूडेंट्स थे सबको इस बैच का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिलेगा। जी हाँ, तो काफी सारे बच्चों को यही था कि सर हम तो पुराने बच्चे हैं। आप पुराने बच्चे हो, आप लोगों के रिगार्डिंग जो है पूरी टीम जो है कंसर्न थी, और इसीलिए हम लोग जो है इस रिट के अंदर गए भी थे, जो फाइनली जो है आप लोगों को डिसीजन भी देखने को मिला। अब लो भी आएगा, अब थोड़ा सा फेयर कंपटीशन रहेगा, राइट। सो जितने पुराने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं हरियाणा एडीए प्रोसिक्यूटर बैच के, उन सबको ये जो हरियाणा एडीए 2026 प्रीलिम्स का बैच है, जो 15 मई से क्लासेस स्टार्ट हम करेंगे, जब तक आपका शायद नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो 15 मई से इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। इसका एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको, ठीक है। खुश हो? अब खुश हो? अब खुश हो? चलो, आर यू हैप्पी एवरीवन? सब खुश हो? तो अब तैयारी में लग जाओ। 255 वैकेंसीज आएंगी, और अब की बार 27,500 बच्चे फॉर्म नहीं फिल करेंगे, अब इसके 50,000 बच्चे जो हैं हरियाणा एडीए का फॉर्म फिल करेंगे। जी हाँ, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है वो हमने बनाया हो, उसका लिंक आपको चैट में मिल रहा है, उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। जो भी अपडेट होंगी वो मैं आपको वहां देता रहूंगा, और इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताता रहूंगा। नहीं जाएगी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि चीफ जस्टिस जो हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के शील नागू जी ने, उन्होंने कॉग्निजेंस ले रखा है इस चीज के ऊपर कि पंजाब एंड हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में एडीए की शॉर्टेज है। सुप्रीम कोर्ट भी जाएगी तो वहां से भी यही सब होने वाला है। देखो, दो जगह पे जो है सिंगल जज ने भी इनके खिलाफ डिसीजन दिया। अब जो डिवीजन बेंच थी जहां एलपीए थी, वहां पे भी इनके अगेंस्ट डिसीजन आया है। सुप्रीम कोर्ट में भी जाओगे तो दो चीजों को नहीं सेटिस्फाइड करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हैं वो जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, राइट। सो वो भी यहीं से ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से जो है एलिवेट होके वहां तक गए हैं, तो ही नोज कि क्या डिसीजन बेटर है क्या नहीं है, राइट। तो एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर नवंबर के अराउंड कंडक्ट हो सकता है। बाकी जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी मैं शेयर करूंगा। हाँ, प्रोसीड विद द एडवर्टाइजमेंट का मतलब है, क्योंकि वो वाली एडवर्टाइजमेंट तो वो कर दी थी, आर्बिट्रेरी डिक्लेयर कर दी थी, और उसको तो खत्म कर दिया था। अब नई एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई की जाएंगी एज पर दी डायरेक्शंस गिवन बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू दी सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स, जहां पे मिनिमम 50% लॉ सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, एंड 10 टाइम्स फॉर मेंस एंड 2 टाइम्स फॉर इंटरव्यू, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, दिस इज दी अपडेट। इस बैच में एनरोल कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। बाद में फिर बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने प्रोसिक्यूटर हरियाणा एडीए बैच ज्वाइन किया था उनको इस बैच का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। सो दिस इज दी अपडेट माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अब हरियाणा एडीए की तैयारी स्टार्ट कर दो। 50% लो के वही सब्जेक्ट आने वाले हैं, ठीक है, वही सब्जेक्ट आने वाले हैं। नई एडवर्टाइजमेंट आएगी, न्यू एडवर्टाइजमेंट आएगी, और जो बच्चे पिछली बारी फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे वो अब फॉर्म फिल कर पाएंगे, ठीक है जी। तो अगर कोई और डाउट हो तो बता दें। सर, ओल्ड कोर्स का टाइम पीरियड एक्सटेंड करवा दो, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओल्ड कोर्स का भी टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, और जो नया बैच आ रहा है उसमें भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो। नो अंजू राठी, रेस्ट ऑफ द पार्ट जो मेंस और इंटरव्यू है उसको नोटिफिकेशन तो पहले ही स्क्रैप हो गया था। चलो ठीक है, दिस इज द क्लैरिटी जो मेरे पास थी, मैंने आपको वीडियो भी दिखा दी, उसको आप एक बार दोबारा से सुन लीजिए।
अभी टाइम लगेगा फॉर्म में, है ना, मे बी विद इन ए पीरियड ऑफ 1 और 2 मंथ आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिर फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। कहने का मतलब ये हरियाणा एडीए की वैकेंसी आ रही है और 50% उसमें लो आ रहा है, तो पढ़ाई कर लो और सिलेक्शन ले लो। हरियाणा एडीए में 255 पोस्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।